Hind and very good morning to each and every one of you. Welcome back again in the second part of India's location, geographical structure, and physiography, part one. As you have seen by the previous one of previous video of chapter number 13, that we have discussed about the location and geological structure of India. Right now, in the second part, yani in this part, we are going to study or we'll see about the strategical location of India. ठीक है why I'm calling it strategical because India is having a location where comparatively no other country is being having the same one. ठीक है यानी पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि इंडिया इज़ हैविंग अ वेरी यूनिक एंड वेरी डिस्टिंक्ट लोकेशन स्ट्रक्चर. ठीक है यानी सबसे अलग है, सबसे अनूठा अगर स्ट्रक्चर भारत का अगर हम लोकेशन देखें तो वो है माना जाता है. ठीक है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में. So now in this particular part, what things we are going to cover up and what things will look up. As you can see in your screen that it has a strategical importance also. What kind of importance would be, uh, as you can see in the second line, ocean have contributed immensely in developing mutual relationships in the ancient times. Right, so after if we'll talk about the land connection, sea is also being connecting us to the various different world. Okay, from the ancient time also we are just believing ocean as a king. Okay, the king of god. Okay, samudrika, या king of ocean we can say. Okay, so some kind of cultural and some kind of heritage things are there in their mind. Okay, इसके साथ साथ इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड अ कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशनशिप विथ अदर पीपल्स ऑल्सो. ठीक है यहाँ दो चीज़ अंडरलाइन कर लेनी है. नंबर वन इट्स कल्चरल and second is commercial. So we are not even just commercially focusing on exchanging goods and services, but also we are being focuses on developing our culture and promoting our culture. So everybody, those who didn't know about Sanatan Dharma or Hindu Dharma, they can make us understand, or they can make them understand, and they can learn about our culture. Okay, it's a type of a publicity, or we can say that it's a type of a awareness in the people. So students, that's why this ocean which is near to India, it's called Indian Ocean. ठीक है हिंद महासागर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि भारत के काफ़ी करीब है और भारत की मान्यताओं को देखकर इसका नाम जो है, इसका नेम है, वो है इंडियन ओशन रख दिया गया है. After understanding the Indian Ocean, let's move on to the second para. And as you can see, that location of India is across international ways also important, right? By opening of Suez Canal, okay, in 1869, Suez Canal is a narrow, peculiar, small width canal which helps the to travel between India and Europe, which almost reduces 7,000 kilometers of India. ठीक है 7,000 किलोमीटर जैसे बच जाते हैं इस स्विस कैनाल के आने से. तो सी रूट इज़ कनेक्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया टू ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, पासिंग थ्रू द इंडियन ओशन. सो दिस थ्री कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो बीइंग कनेक्टेड विद दिस. ठीक है जिनमें नाम आपको याद रख लेना है कि दैट इज़ नंबर वन विच इज़ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड यूरोप. दिस आर तो जिससे स्विस कैनाल के खुलने से इन सबका काफ़ी फ़ायदा होगा. इसके अलावा द सरकम अफ्रीकन वाटरवे स्विस कैनाल is a waterway passes through India. In the same way, Canada and USA can be reached through the same waterway via Strait of Malacca and Pacific Ocean. तो आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल यानी जब से स्विस कैनाल खुल जाएगी या खुल गई है उसके यूज़ से हम ना सिर्फ अपना बहुत समय बचा लेंगे एंड वी कैन रीच टू ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीका और यूरोप वेरी फास्ट. ठीक है हम बहुत जल्द पहुंच पाएंगे और इससे जो हमारा टाइम पहले ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए लगता था वो अब कंपैरेटिवली हमारा जो है वो कब लगेगा. जैसा कि आपको अभी देखा कि इंडिया से यूरोप जाने का जो रास्ता है वो 7,000 किलोमीटर जितना कम हो जाता है अगर आप स्विस कैनाल को ट्रैवल करते हो. तो यानी अगर ज़मीन से जाते हो और स्विस कैनाल से जा रहे हो तो 7,000 किलोमीटर यू विल सेव इट. राइट, इट्स अ बिग नंबर. Then the last paragraph shows that India has a contract with many countries since many centuries. So this is true. How India is being involved in businesses, whether it is primary, secondary, or tertiary sector, right? They are having a actively partnership.
ठीक है, in all the products over there. So goods and ideas being like exchanged in ancient time. Okay, nowadays also people are exchanging goods and things for procurement of money. Okay, and in the ancient time it was not like that. So similarly, the concepts of Upanishads, stories of Ramayanas and Panchantras, then therapeutical methods and Indian numerological figures, decimal system, these all are the distinct Indian culture, or we can say that Indian speciality, which is about to come on the screen, right? So in the same way, India has the important location in the southern Asia, as in the prominent part. India is having 29 states and 6 union territories. Now, although it was being different because after the amalgamation of Kashmir in India, there are a number of states being increasing, but you have to follow the textbook only. ठीक है, if textbook is being written like this, you have to note it in the same manner. ठीक है बच्चों, so after understanding the strategical location of India, let's discuss about the 29 states and the capital of Union Territory. It's Delhi only. Nowadays it's called New Delhi, right? So this is a one fact was given to you that Telangana was created 29th state or the motherland of state of Andhra Pradesh on the date 2nd July 2014. ठीक है, so the latest one is separation was done in 2014. It is by Andhra Pradesh, and where they have excluded a small part which is now known as uh, uh, Telangana. ठीक है, it's having an identity of a different state even, right बच्चों? So let's talk about the neighbors. ठीक है, the neighbors of our country. So generally, as you can see on your screen, that Afghanistan, Pakistan, some part of China, then Bhutan, then Bangladesh, Sri Lanka. These are the major neighbors of our country. ठीक है, as you can see in the north, Pakistan, Afghanistan, and China. Then these three. Then fourth one is Bhutan. Fifth one is Bangladesh. Then sixth one is Sri Lanka. Right. So these are the major neighbors of India, which is residing at the closest boundary of India. So in the same way, Sri Lanka, Maldives are the maritime neighbors, and Sri Lanka is separated by the Palk Strait and Gulf of Mannar. यानी अगर हम आप यहाँ मैप में देखते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो स्मॉल लाइन, छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है आपको श्रीलंका और इंडिया के बीच में. ठीक है, वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है. उन्हें हम पाल्क ऑफ स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं. लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है. तो कीप योर fingers tight. That is, Lakshadweep is in Arabian Sea. It is in the western side, and Andaman Nicobar is in the eastern side of Bay of Bengal. Right, bachcho? Then we'll move on to the next topic, that is geological structure. Right, as in the first part I have discussed about the geological structure. Like in India, we are having a different type of structure, right? Like mountains, plains, and plateaus and coastal plains we are having. Right, so we'll discuss about this. What is geological structure here? Currently the physiography of India is being resulted of a tectonic plates here. So what do you mean by tectonic? The plates which is moving under the we can say that under the earth, ठीक है, through which we can having different constructive effects. ठीक है, different constructive effect and different destructive effects, and such effects of both constructive as well as destructive, as I said. The knowledge is about for the interior part of earth is very interesting. Why it is interesting? Because as we have studied in the past or in the small standard, that earth is having three layers. Okay, the innermost is core, then mantle, the second one, and the topmost is the crust, right? So these are the three layers where we can find. Core is the liquid or molten rocks. Okay, and the second one, mantle, is having soft rocks, and the hardest rock are generally found in the uppermost layer, which is crust. So we can find that earth, the interior surface of earth is having radioactive processes.
ठीक है, अंदर होती रहती है. इट टेंड्स टू reach at the surfaces earth by generating convectional currents, and such currents, upward currents, break the upper layer and into a large pieces, and this is also called lithospheric plates or tectonic plates. So if in exam that if lithospheric plates being asked, so you just have to keep in mind that they were asking about tectonic plates only. तो tectonic plates concept easy है, सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है. जनरली कितने प्रकार की, कितने टाइप्स की प्लेट्स इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है? एट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द माई एक्सट्रीम लेफ्ट. नंबर 1 इट्स पैसिफिक प्लेट. ठीक है. सेकेंड वन इज़ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. थर्ड वन इज़ साउथ अमेरिकन प्लेट. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ. देन थर्ड वन इज़ फोर्थ वन इज़ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. एंड देन the next one European plate, as I said, fourth one. Fifth one is African plate. Sixth one is Indo-Australian plate, and last but not the least, Antarctic plate. So these plates are generally plays an aesthetic role in the constructive manner and in the destructive manner. Constructive means if we'll start a building, that is thinking about a constructive measure where we are finding something, we are finding a solution. But destructive is pretty much different. I hope you all are remember that. Okay, you know that what is it. So up to here we have to focus us on our studies only, and these are the 7 most important plates are generally uh, given in your textbook. So please underline it, keep in mind, take care for the final exam. And then after understanding these 7 plates, let's move on to the further one, that is at some places of India of our plates have been come closer, it's called convergent. कॉन्वर्जेंट मीन्स वट क्या हुआ कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट मीन्स कुछ बन रहा है तो वो इसे कन्वर्जेंट कहेंगे, और अगर कुछ टूट रहा है तो ये डाइवर्जेंट कहेंगे. और उसके बाद अगर कुछ बना नहीं, कुछ टूटा नहीं, लेकिन सिर्फ शेप चेंज हो गया तो इट इज़ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ठीक है. सो दिस 3 आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. Convergent is a constructive effect. Mountains or plateaus are the example of this only. Then divergent plates are generally diverge from each other and found lake or cracks. ठीक है. And then transformed boundary. This is also done but at a very smallest level. So after understanding this 7, let's move on further. That these plates are having million of years. ठीक है, सालों से नहीं अरबों सालों से ये सब ज़मीन के अंदर है. ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल टू द टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्थ. यानी यही छोटी छोटी जो बातें होती है और जो प्रेशर होता है उसी से वॉल्केनो होता है, वो फटता है, और अर्थ की इन्हीं प्लेट्स की वजह से, सच एक्शंस की वजह से ही हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं. So such things, whenever this plates drift away and fissures are created under the landform. Here fissures are the cracks. ठीक है. जो जब दो बीच में से अगर कोई दोनों प्लेट चली जाएगी तो ज़मीन के अंदर क्या पड़ जाएगा? क्रैक पड़ जाएगा, बिग क्रैक. Such continents are situated along this fissures and drifting continuously. Such plates are called convergent plates. ठीक है. और ऐसी प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्वर्जेंट. तो याद रखिएगा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट या फिर कॉन्वर्जेंट. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट वर्ल्ड्स मेजर प्लेट्स, ज़्यादातर हम लोगों को जो प्लेट्स देखने को मिलती है डिस्ट्रक्टिव प्लेट, ये आपको डार्क में दिखाई देगी. ठीक है. इंडिया में कहाँ कहाँ है डिस्ट्रक्टिव. ठीक है. ये आपको एक अच्छा माइंडसेट के लिए ये मैप भी एक बार देख लेना चाहिए. ठीक है बच्चों. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दैट इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ अ वास्ट एंड एंशियंट लैंड ऑफ गोंडवाना, एज आई सेड अर्लियर. ये सब पहले गोंडवाना का ही हिस्सा थे और धीरे धीरे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका भारत से अलग होता रहा. भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो कौन सी प्लेट पर है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ठीक है. वी आर शेयरिंग प्लेट विथ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट. इट इज़ एन लार्ज यूरोपियन एक्सटेंट. ठीक है. लार्ज यूरोपियन एक्सटेंट यहाँ इसलिए आ जाता है बिकॉज बिफोर द 5 करोड़ ईयर्स, ठीक है, 5 करोड़ ईयर्स, बिफोर 5 करोड़ ईयर्स, ड्यू टू सम कोल्यूशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इन यूरोपियन प्लेट. ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के टकराने से, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट्स के टकराने की वजह से द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज़ बीइंग इमर्ज्ड.
आउट ऑफ तेतिया सी, यानी जहाँ हिमालय है वहाँ कभी तेतिया सी हुआ करता था, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के आपस में टकराने और की वजह से इतना भीषण जो है वो टकराव है, जो कोलूजन है वो हुआ होगा आज से 5 करोड़ साल पहले, ठीक है, जिससे आज हम हिमालय, वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ, देखते हैं। इसके अलावा whereas a large valley is also being formed in Himalaya system, ठीक है, लार्ज वैली भी बनी जहाँ पे सारे एलुवियल सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक। आज हम गंगा के प्लेन्स देखते हैं जो कि हाईली फर्टाइल है, वो भी सब इसी के कारण है, इट्स कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट्स के कारण ही होते हैं। बट स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दिस चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस इन वीक और मंथ और ईयर, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। अ ह्यूज वॉल्केनिक eruption took place in नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, देखते होंगे सुनते होंगे वॉल्केनिक eruption होता ही रहता है। पेनिनसुला प्लेटू में स्पेशली देयर इज अ रिजल्ट ऑफ विच वेस्टर्न पोर्शन ऑफ प्लेटू इज डिसइंटीग्रेटेड एंड इट वाज सबमर्ज्ड, ठीक है, तो जो वेस्टर्न था पार्ट वो टूट कर अलग हो गया और पानी के अंदर चला गया। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वॉल्केनो इरप्शन के कारण भी बहुत सारे जो हैज़ेडियस थिंग्स हैं वो हो जाती है, विच लेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी, और जिससे अरेबियन सी फॉर्म हुआ। तो हम ये कह सकते हैं स्लोली स्लोली जो पूरा गोंडवाना लैंड आपस में कनेक्टेड थी वो एक दूसरे से दूर होती गई, डिस्टिंक्ट होती गई स्लोली स्लोली, एंड सभी आज हम इन सभी को एक अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। So, in the last para, it was a conclusion given to you. Please pay attention over here, okay, because it is an important paragraph. As a large industry or a diversity we can see in the Indian subcontinent, ठीक है, different type of diversity, ठीक है, different culture, religion, color, caste, creed, different type of, and such different type of lofty mountain ranges, ठीक है, huge big high mountain ranges, many plateaus, summits and passes with the Ganga and Yamuna, and Brahmaputra is also river from the northern plains. So these three are the major rivers which is contributing in Indian culture. There, as the alluvial deposit have formed this as a plain, two edges in the form of ghats and two sides of a plateau of a coastal plain, which is in the eastern and the western margins is being situated, ठीक है। तो हम ये जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही संकरे भारत में देखते हैं, दक्षिणी जगह पर ये देखने को मिलेगा, दक्षिणी मतलब साउदर्न मोस्ट पार्ट पर, और साउदर्न मोस्ट पार्ट में भी कौन सी जगहों पर, स्पेशली कोने कोने पर, ठीक है, यानी जो कोस्टल प्लेन होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरिया मीन समुद्र के पास की जगह, वहीं पे ये प्लेन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट वेरिएड कल्चर, whether we'll talk about culture or heritage or the relations, ठीक है। सो एंड इट इज़ ऑल्सो इन लैंड ऑफ अ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, ठीक है बच्चों, एंड वी कैन से दैट इंडिया इज़ हैविंग डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी, ठीक है, which is a two edges of ghats and two sides of plateau. So if we'll talk about from the northern part, the north से अगर हम बात करते हैं तो हमें हिमालय, देन प्लेटू सॉरी प्लेन्स, मैदान, फिर प्लेटू देखने को मिलता है, पठार, देन कोस्टल प्लेन जिनकी अभी हमने बात की, और देन आर्चिपिलोस, ठीक है। सो दीज आर द 5 मेजर फिजियोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया. In the next video we'll discuss with the question answers, take it till then, try to solve it. If you are having any doubt, query, confusion regarding MCQs or any of the question, please post us, take it in the comment box, and we'll try to get back to you soon, ठीक है। Till then, go thorough with this full chapter. If you have not seen the previous part, go through that part and watch that also. And thank you so much for giving your time and your precious attention, ठीक है। Mark your doubts and your confusions, ठीक है, by seeing the both videos, and comment us in the comment box, or you can mail, or directly you can text us. Till then, take care of yourself and your family, ठीक है, and hope for the best. Soon we are going to meet, ठीक है, soon school are going to be open, surely we are going to meet, and thank you so much. Just I'll not take your much time, and have a nice day ahead, right? Jai Hind.
everyone.